It's a matter of out of turn promotion. अच्छा, It's a second, third round of litigation. reply is filed. Yes, ma'am. ठीक. This is a case, in 2006, there was one gang, Ram Babu Dayaram Gadaria gang in district Shivpuri. I was one of the member in that team which was constituted for the purpose of elimination of that gang. In that encounter, the dacoit Ram Babu was killed by the team comprising 16 persons, including the petitioner. Earlier, all those 16 persons were recommended for out of turn promotion. After recommendation, only 13 persons were. All the three persons initially filed a writ petition before this honorable court in 2011. Since there was no valid reason for rejection of their claim, and their case was at par with those persons, the High Court, Honorable High Court disposed of them with a direction to reconsider. After reconsideration, all those three claims of those three persons were uh, rejected. Those two persons, including this person, filed a petition before this honorable court. The petition of those two incumbents were decided by this honorable court by passing a detailed order that these things have to be considered by you. So my case was remaining pending this case. And pursuant to the direction given by in respect of those two candidates, the government has again rejected. Again rejected. Yes. Then those two persons challenge before this honorable court. This honorable court said, though no reasons have been assigned by the respondents, now we will not demand, we will directly direct them to give out of turn permission. And in that way, my lord, those two persons were given out of turn permission. Then this matter was pending before this honorable court in respect of this petition. My lord, I filed an application for taking documents on record. My lord, that order was put before the honorable court. My lord, then the matter was decided in respect of this petitioner. That order is, my lord, annexure P9, page 56. Para 8, I in relation to the other two persons. नहीं, आप ही का है ये. Yes, yes, yes. So I claim parity with respect to those two persons. Para 8, so far as prayer of the petitioner for disposal of the present petition, in terms of the order passed by this court in the case of Dinesh Singh is concerned, the role played by each and every police ये person. एक मिनट कहाँ पढ़ रहे हैं आप? Para आप 8, para 8. yes. Passed by in the case of Dinesh Singh is concerned, the role played by each and every police personnel has to be considered on individual basis. Therefore, no blanket direction can be given in the light of the order passed by this court in the case of Dinesh Singh. Furthermore, in the case of Dinesh Singh, the case of the petitioner therein was already considered in detail by this court by order dated so and so passed in WP so and so. And since the claim of the said petitioner was declined by ignoring directions given in so and so, therefore the case of Dinesh Singh was decided. However, in the present case, the performance of the petitioner in the encounter is not in dispute. The only question for consideration is that whether he was entitled for out of turn promotion or was entitled for letter of appreciation. Then, my lord, after quoting certain judgments and held in para 10, para 10 and 11 are only important. Thus, it is clear that this court cannot interfere with the assessment made by the respondent. Pausing here for a moment, in the case of the petitioner was similar to that, but since that was a third round of litigation, the court said in that case that we were having no option but to direct you out of turn promotion. The Honorable High Court distinguished it on the ground that earlier there was a detailed order in their case. But so far as my claim with respect to parity with those two persons are concerned, it's still, my lord, it holds the field. Where is that finding that it is at par with the other two persons? No, my lord, there is no finding. And even my case was that the court says that since it was a third round of litigation, they got a detailed order earlier. Therefore, it was that case. Now, para 10 and 11 are important, last two para. Thus, it is clear that this court cannot interfere with the assessment made by the respondent, but where the participation of the police personnel in encounter is not in dispute, then the respondent must give a specific finding with regard to the role played by each and every police personnel for granting out of turn promotion to the same police personnel and for granting letter of appreciation to others. If the order dated so and so passed by respondent number 2 and the letter dated so and so written by the IG Gwalior Range Gwalior are considered, then it is clear that the Inspector General of Police Gwalior Range Gwalior had recommended the name of only those persons for out of turn promotion who had played the leading role in the encounter as well as for searching out the dead body of dacoit Dayaram Gadaria, and the names of remaining persons were
recommended for grant of letter of appreciation. However, the respondents have not filed any document in support of the observation by IG Gwalior Range Gwalior in its letter dated so and so. In absence of any document, it is not possible for this court to accept the classification done by the respondents. Accordingly, the order dated passed by respondent number 2 is hereby quashed. The matter is remanded back for fresh adjudication after considering the documentary evidence with regard to the role played by those persons who were granted out of turn promotion vis-a-vis the role played by the present petition. Let this exercise be done within a period of 6 persons whereto, my lord, the impugn order has been passed, annexure P1, which is completely non-speaking. There is no whisper about any classification with respect to those who were given out of turn promotion and those who were given letter of appreciation. And my clarity claim with respect to Dinesh Singh, who handily situated, nothing has been mentioned. My lord, it is hit by Kranti Associates judgment of lordship C P1. उन्होंने तो जिस अथॉरिटी को ऑर्डर किया था उन्होंने तो ये कह दिया कि जो रिकमेंडेशन आई है उन पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं है और मुठभेड़ में सम्मिलित होना अब अति विशिष्ट उल्लेखनीय कार्य को चिन्हित नहीं किया है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत नो रीजंस व्हाई इट वाज distinguishable, nothing, my lord. The role played by those who were given out of promotion, my role, nothing. All those documents were given. So my only submission is that they may be directed to decide after giving the reasons with respect to the role played by the petitioner vis-a-vis others. This is, and in fact, there was a direction like this in the earlier petition. बताएं सर गुप्ता जी। Sir, kindly see the lordship, मैंने उसमें एक order कर सकता है सर। ये permit करना सर, ये इंदौर बेंच में सेम इशू पेश हुआ था सिंगल बेंच में, जिसमें सर एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस संजय शुक्ला, उसमें सर लाइव लॉ का रिपोर्टेड है 2023 लाइव लॉ SC 277। ये आप इस पे देख रहे हैं क्या? हाँ सर, मेरे इस पे यदि ये शेयर कर दें नहीं होगा। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का कोई बता रहे हैं। हाँ सर, सुप्रीम कोर्ट का है सर, ये संजय है। बताइए ये उसका नंबर सर, मैं ये नंबर WP नंबर है 602 ऑफ 2013 इंदौर बेंच का है सर। हाँ और इसकी रेट अपील भी है सर 1733/24। इसमें सर संजय स्टेट ऑफ MP एंड अदर्स वर्सेस संजय शुक्ला रिपोर्टेड 2023 लाइव लॉ SC 277 in which the apex court has set aside the order passed by the red court where the out of term promotion under section 70A was granted solely on the ground it cannot be claimed as a right of matter। तो ठीक है। हाँ सर। He says that you have not assigned any reason for नहीं सर, इसमें एक और डिटेल, ये जो संजय वाला जजमेंट है इसमें ये तक कहा गया कि कमेटी को वहां पे कमेटी वो देखेगी कि इस आदमी का कितना रोल है। कहाँ देखा आपने? सर इसी जजमेंट में हाँ, सर तो मैं अभी प्रिंट देता हूँ। इस केस में ये बात कहाँ देखी आपने? वही तो उनका कहना है, कोर्ट ने रिमांड भी इसी ग्राउंड पे किया था। ये सर जो है आपने 11 लोगों को दे दिया, 3 लोगों को नहीं दिया। सर वो होता क्या है कि तो टीम में आपको तो डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा ना कि भाई इसको ये इसलिए ये सर एक बार ये जजमेंट का लेक्चर देखो, मैं अगर थोड़ा सा वो पढ़ दूं, है ये क्लियर, हाँ द रिलेवेंट पोर्शन ऑफ द अपोजिट जजमेंट इज रिक्रूटिंग हियर देयरफॉर एज पर द रेगुलेशन 70A 70A जो था पुलिस रेगुलेशन एक्ट में वो ओमिटेड हो गया, हाँ तो आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन को का वो नहीं, इसमें ये डिस्कस किया। Therefore, as per the regulation 17A, the out of turn promotion cannot be claimed as a matter of right. It is true that the case of out of turn promotion is required to be considered objectively, and if the case is fall within any of the category mentioned in the regulation 70A, once the committee takes a decision on the consideration of the case objectively in line with the regulation 70A, the process is found to be fair, just and equitable. Therefore, the court intervention is any minimal one considering the report of committee. It appears that the case of the respondent for out of turn promotion was considered by the committee objectively, and the case of the respondent was considered taking into consideration all the relevant aspects on which out of turn promotion under regulation 78 can be granted. As observed herein above, out of turn promotion cannot be claimed as a matter of right, and only in case where the case falls within the parameter of regulation 78, out of turn promotion cannot be granted। नहीं सर इसमें कमेटी ने टेस्ट किया और कमेटी में जितने मेंबर्स थे वहां पे जो डकैत से जिनका आमना सामना चारों कॉर्नर से, नहीं, वो कहाँ है डिस्कशन ये वाला? सर कमेटी ने क्या देखा है हाँ। उतना तो बताना है। P1 में सर एक P1 में हाँ P1 page ओ सॉरी P1 को
सर थोड़ा सा एक ही पेज का है, थोड़ा समझ में आया। दिनांक 5/8/16 को 5 लाख के नामी डकैत गडरिया को धराशायी किए जाने के फलस्वरूप घटनाक्रम में सम्मिलित कुल 38 अधिकारी कर्मचारियों के नाम क्रम में पूर्व पदोन्नति के लिए विचारार्थ भेजे गए थे, जिनमें आरक्षक ये राजन सिंह भदौरिया, ये सब प्रेजेंट एप्लीकेंट, इतनी इतनी विश्वल का नाम भी शामिल था। इसके उपरांत पुनर्विचार करने पर विशेष लॉर्डशिप अधिकारियों कर्मचारियों के नाम क्रम से पूर्व पदोन्नति के लिए विचार हेतु पुनः अनुशासित किए गए थे, जिसमें आरक्षक इतने इतने के नाम की क्रम से पूर्व पदोन्नति हेतु अनुशंसा नहीं की गई थी, अरे की गई थी, बल्कि इन्हें नहीं की गई थी लिखा हुआ है, sorry, पदोन्नति हेतु अनुशंसा की गई थी। नहीं सर नहीं है सर, है? ये मार्क कर दीजिए। ये सर नहीं है, पहले ऊपर के पैरा में था कि पहले भेजा था आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए। सर ये जस्ट ऊपर से ये 6 लाइन आपके टाइप्ड कॉपी में कुछ गड़बड़ है, यस नहीं गायब हो गया ये सर, मोस्ट ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, आप इसमें से पढ़ो। हाँ सर, हाँ। अनुशंसा नहीं की गई थी, बल्कि इन्हें पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश की ओर अनुशंसा पत्र दिए जाने की प्रशंसा अनुशंसा पत्र दिया की थी। हाँ, यानी अनुशंसा पत्र दिए जाने की केवल इनकी अनुशंसा की थी, ना कि उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की। परंतु अनुशंसा के आधार पर पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश के द्वारा 7/8/2007 को आरक्षक इतने इतने वाहिनी को प्रशंसा पत्र प्रदान किया जा चुका है। ये कंप्लीट हो गया जो उनको फिर दिया गया था। देन लॉर्डशिप आरक्षक राजन सिंह भदौरिया को क्रम से पूर्व पदोन्नति नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में याचिका सचेंसक दायर की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर द्वारा 27/1/2000 सचेंसक निर्णय पारित कर। सुनिए गुप्ता जी, पूरे ऑर्डर में पुराने फैक्ट्स लिखे हैं बस, अब कंसिडरेशन आखिरी की 2 लाइन में है इसी पेज पर, नहीं बीच में सारे फैक्ट्स लिखे नहीं सर, पैरा सेकंड जो थर्ड पैरा है उसकी सेकंड लाइन में विशिष्ट योगदान दिए जाने का उल्लेख नहीं। दिस इज लॉर्डशिप। जब तक उनका सर इसी में पैरा 3 की ये इंपॉर्टेंट है सर, लास्ट लाइन राजन लास्ट सेकंड लास्ट राजन सिंह सेकंड वाहिनी लॉर्डशिप पूरा पढ़ दें सर। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण किया गया तथा परीक्षण उपरांत पाया गया कि पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर जोन के टीम में शामिल कर्मचारियों के कार्य के आकलन तथा पुरस्कार अनुशंसा के सर अनुशंसा प्रतिवेदन क्रमांक दिए गए कुछ सर समझ में नहीं आ रहा। ये ऐसे पुरस्कार ये आरक्षक इतने इतने ग्वालियर के द्वारा किसी व्यक्तिगत सराहनीय कृत धैर्य प्रदर्शन कर विशिष्ट योगदान दिए जाने का उल्लेख नहीं। तो जब इनका स्पेसिफिक नहीं है तो जिनका जितना सा एक्ट था उतना सा इनको एक्ट के अकॉर्डिंग इनको रिवॉर्ड देने का अनुशंसा प्रमाण पत्र दे दीजिए। ऐसा उल्टा कमेंट आया कि उन्होंने ऐसा कहा है, अथॉरिटी ने तो कुछ डिसाइड नहीं किया। जिस और नेक्स्ट नोट से इसी में पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर के पत्र इतने के द्वारा लीडिंग मुख्य विभाग के का सूचनाएं पारित करने पर दयाराम गडरिया को तलाश बढ़वाने में फलस्वरूप 15 अधिकारियों को क्रम से पूर्व पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है। उपरोक्त के अतिरिक्त आरक्षक इतने 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 के परीक्षण से पूर्व पदोन्नति की अनुमति प्रदान की है कि आप ये अपनी कंसिडरेशन वाली रिपोर्ट भर सबमिट कर दिया करें रिप्लाई के साथ, सब खाता हो जाएगी। यस अब कोर्ट ने हाँ, आपको डायरेक्शन दिया पिछले राउंड में, रिप्लाई में हमारा बस केवल कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, मैंने देख लिया सर रिप्लाई। वही तो दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ओआईसी के स्टेटमेंट से कैसे डिसाइड करेंगे सब चीज, कोई दिक्कत These are all based upon नहीं। सर आई विल कॉल उतना ही तो आपका स्कोप हमारा स्कोप है, इसका आपने कंसिडर किया कि नहीं किया सर बराबर, आई विल कॉल और कॉल पता इट लगेगा आपके प्लीज बिफोर योर लॉर्डशिप ऑन द नेक्स्ट। क्या करें, वापस भेजने के बजाय इनसे मंगा लें, इसी को यहीं पर देख लेंगे दोनों का। आप जिससे पैरिटी क्लेम कर रहे हैं उसका क्या रोल था और आपका क्या रोल। Ultimately, if your lordship would say this order is hit by para 11, para 11 of the earlier order under which ना, they- दैट्स करेक्ट, यू आर राइट देयर। 2 मिनट में वापस भेज सकते हैं, Yes. लेकिन अल्टीमेटली डिसाइड उसी से होना है कि इन्होंने क्या देखा है वो Therefore, that authority is required to decide. Again, that judgment would come before this honorable court, that this honorable court cannot decide. The material has to be. No, we will prime facie see whether there is some distinguishing features between you and the other person with whom you are claiming parity. Otherwise, if your lordship thinks fit, because they have not decided. Admittedly, there is nothing, no whisper, neither in the written nor in there. And earlier also, my lord, this was the specific observation by the Honorable High Court, why there is nothing on in written. So your lordship may direct them positively, considering in the light of para 11 of the impugned order. They were directed to comply with this order. Para 11 of the High Court. Yes, my lord, page 62 of this compilation. Your lordship. Earlier order was set aside.
Earlier also it came, in absence of any document, it is not possible for this court to accept the classification, then para 11, accordingly. कंपैरेटिव असेसमेंट होना चाहिए था Yes, एक्चुअली कि वो and they- जिनको they दिया है presents- वो उनका क्यों डिफरेंट है ये इससे। वो करके ऑर्डर पास और कर और क्लियर हो जाता within और 60 days, अदरवाइज तो वो फिर रिपोर्ट से ही वेरीफाई होगा कि वेदर ये टेकन द डिसीजन ऑन द कंपैरिजन। let this exercise be done. डिसीजन तो हाईकोर्ट के डायरेक्शन है उसमें नहीं है ये वाला, क्योंकि आपने वो कंसिडर ही नहीं किए थे। वो नोटशीट चली होगी जो भी वो बांटेगा। It should appear in the order. The petitioner is agreed by the order dated 28/4/2020 and except P1, whereby his claim for grant of out of grant promotion has been rejected by the respondent authority. Without going into the facts, going into detailed facts, it is sufficient to mention here that in the earlier round of litigation, the petitioner approached this court by filing WP 6402 of 2011, challenging the action of the respondents and denying him out of turn permission. This court disposed of the petition by order dated 27/1/2020 and except P1, wherein this court emphasized found that with the following directions as a particular para 10 and 11 page number 61 or 62. Next. Thus, this court issued specific direction to the respondent authority to adjudicate the matter afresh after considering the documentary evidence with regard to the role played by the persons who have been granted out of the promotion vis-a-vis the role played by the present petitioner. The impugned order has been passed in compliance with the aforesaid direction of this court. Full stop. However, a perusal of the impugned order goes to show that there is no discussion of the inter se role played by the persons who have been granted promotion and the petitioner. Full stop. The order only states that there is no special contribution of the petitioner in the encounter. Full stop. Pursuant to the order of this court, the respondent authority was required to make a comparative assessment of the role played by the members of the team who have been granted out of turn promotion and the role played by the petitioner. Next, view of the aforesaid, the order impugned passed by the respondent authority is found to be not in consonance with the direction issued by this court. Next, accordingly, the order dated 28/4/20 and except P1 is set aside. The matter is permitted to the respondent authority, respondent number two authority for considering the matter afresh after specifically adhering to the directions issued by this court in para 11 of the order passed in WP 6402 of 2011. Let necessary be done within a period of 60 days from the date of submission of certified copy of this order. Petition is disposed of with the effect. उसमें वो सीसीए रूल्स नहीं, स्टैट्यूट 31 में प्रोसीजर दिया हुआ है। सीसीए नहीं है, स्टैट्यूट 31 ही वो हमको यासी पे दे देना। ठीक है, विल मॉडिफाई दैट। सीएल 6 नोटिस करने इसको लंबित करते हैं डब्ल्यूपी हमारे ये सब तो हो गया, ऑर्डर पास सब डिक्टेट टाइप 96 में लॉर्डशिप पिटीशन पेंडिंग के द्वारा रिस्पोंडेंट में काम नहीं करने देने, मैंने सैलरी के लिए लगाया था 17 को लगा था, लॉर्डशिप ने आज के लिए लगाया था। फिर 96 में 96 आपने कोई एप्लीकेशन लगाई है? एप्लीकेशन लगाई है? हाँ ठीक है, लंच के बाद देखते हैं। सर एक 96 को नोट कर लेना। 9 इसमें जो एग्जाम कंडक्ट हुई थी that was cancelled and therefore the petitioner informed me that he wants to withdraw. कहाँ है पिटिशनर? ये भार्गव साहब है, आफ्टर लंच बुला लीजिए, लंच के बाद में बता दीजिए। इन प्रक्रिया तो आप हमको शाम को भी बता देंगे तो बता हाँ, और बताइए। वो 18 नंबर है ना इनका, जो मैं नोटिस ले रहा हूँ, मुझे जवाब के लिए समय चाहिए। 18 नंबर आपने पावर नहीं फाइल किया? नहीं पावर अभी पेश करेंगे, अभी तो करना है। बस बस थोड़ा 18 नंबर में प्रेस फॉरेंट इज ग्रांटेड 3 वीक्स टाइम टू फाइल रिपोर्ट। अच्छा और ये भी लिखने के नोटिस एक्सेप्ट करता हूँ मैं, रिस्पोंडेंट नंबर accept notice on behalf of respondents हाँ। and praise for this granted 4 weeks time to file reply। चलिए, ये 18 नंबर निकाल देना आपने। ठीक है, और बताइए। हो गया, चलिए।